Welcome back, ladies and gentlemen. A video of students at the posh, expensive Ashoka University near Delhi raising anti-Brahmin, anti-Banya, very casteist slogans has stirred a fresh controversy. The Indian education system has not been exempt from caste biases, but this incident of what has happened at the Ashoka University, such open casteism, has shocked everyone. This is being described as posh casteism on the Ashoka campus. Another controversy has hit the posh Ashoka University. A video of students raising casteist slogans has gone viral, where they can be heard demanding caste census on campus and shouting anti-Brahmin and anti-Banya slogans. Former Infosys Chief Financial Officer Mohandas Pai has questioned caste hatred in the university, seeking intervention of the Union Education Minister. Following the uproar on social media, the Ashoka University has issued a statement deploring hatred against any individual or group. It assured measures to ensure peace and harmony is not disturbed. Why is posh casteism prevailing in the poshest university? Has reverse casteism become a fad? Let's debate. Ratan Sharda is debating here with Atikur Rahman. Mr. Sharda, is Ashoka University, which is an expensive and posh university, is it the posh JNU now? Is it the posher version of JNU? Really bad line there with him, so we'll try and fix the line. Let's hope he gets a better bandwidth. Atikur Rahman, you know, this anti-Brahmin, anti-Banya, Brahmin, Banya, caste, Murdabad, what is this? Why this caste hatred? Arnab, we are talking of students, the community. It's like what used to happen in JNU. Brahmins leave the campus, there will be blood. Brahmin Bharat Choro, Brahmin Banias, we are coming for you. We will avenge. Pardon me? So they are. What is happening on the Ashoka University campus is reminiscent of what used to happen in JNU. The slogans, can't the people introspect that why are they saying that the Brahminism in India is reaching the heights against the Dalits, against the downtrodden? What a bizarre comment here. Atikur Rahman, if someone were to speak, if someone were to make, 1 minute, if someone were to make such unfortunate statements against the Muslim community, would you say Muslims should also introspect? Yeah. On why people are attacking and abusing them? You cannot make that. No, you cannot. No. You can't make that kind of comment. Invite them. Why don't you invite them? You give them the platform. What are their worries? What are their issues? If the Brahmins and the Banyas are taking over the downtrodden and they are exploiting them, isn't it your duty, Arnab, to voice their concerns? The students are voicing the concerns of the downtrodden. No, it's not. No, it's not. Absolutely not. I have no such illusion or interest. No, 1 minute. Just Atikur, 1 minute. 6 or 7 years back, when the same kind of rubbish used to happen on the JNU campus, and when on the JNU campus it was said, Afzal hum sharminda hai, tere qatil zinda hai. Would you say I should understand their concerns and understand why they are supporting Afzal Guru? Should I have said at that point of time, I will support the people? You told them they are anti-national, they were not. It's not a question of fault. It's a question of security. Please understand. Yeah, I branded them anti-nationals. I will brand when they said, you remember when I used the phrase Tukde Tukde gang for the first time?
You remember it Which was the me, Parliament denied. and everybody picked on that phrase. Everybody uses Ministry it of now. Home denied. There is Why no did I use the word tukre tukre? So you were wrong. This was the slur you were One minute. using against the students. Atik, Were you right Atik, in it was using not a this slur, it's a of description. tukle It's a description. for the student community which belong to Absolutely. India? Absolutely, I was. Not for the student community. Absolutely, I So, was. Absolutely, they I were was. I was They were 100% correct in describing him as the Tukre Tukre gang. And there are many people in the country today who are happy that I used the word Tukre Tukre gang So who gave as you the an right to overall use this expression to against the categorize student people community? who say Bharat tere tukre honge, inshallah, inshallah. I call them then and now, and in the future I call them Tukre Tukre gang. My You question never is, proved your point, in Arnab. You never 2024, proved your you point that they ever said that Bharat tere tukde honge. They never said this. They never said this. This got proved in the courts. There was nothing on to the prove. floor It was of a the fact. court. They never, There was, they never I mean, said Bharat tere tukde honge. you And then can since try they and look never for any looked for it, Atikur, you can try and use any, you can try and use any technical arguments. You know that what I said was correct, Because very you are much correct. technical And that today, point is Arnab. very You are unfortunate technical today. that I have not been able to hook up with, one minute, yeah, don't speak over me. It's very unfortunate I have not been able to hook up with Ratan Sharda because you don't have a contrary person, so you're fighting with me, but I'll continue to fight with you for a few more minutes. I'm You see, Atikur fortunate Rahman. that an RSS ideology is not getting a ground. Okay, we got Ratan Sharda in. Congress. Now, now listen to me. First of all, here's a couple of pieces of unsolicited advice to the Ashoka University students. Point number one. Students at Ashoka University are aware that it is one of the most expensive and posh campuses in the country. So these are not underprivileged children at all. These are people from privileged families, I'm sure most of them, who can afford to pay what most Indians cannot. Second, to these beneficiaries of privilege to come and say, down with Brahmins, down with Baniyas, I want to tell all these beneficiaries of privilege that the future of this country is not about caste. The future of this country is about meritocracy, entrepreneurship, startups, the space age, and a booming economy. There are people who will pull you back. It is up to these kids to decide whether their role models will be Lalu Prasad and Rahul Gandhi. This country has rejected the idea of a caste census, and it becomes the responsibility of academics and quasi-academics to make sure that the younger generation of this country does not have that same mindset which burnt campuses down in 1989, 1990. Ratan Sharda, is very strange what happened at the Ashoka University campus. You know about it. What do you think? What do you think? Arnab, I'll just share some thoughts. It's a very serious issue. So nobody heckles me. I found out the name of the founders of this university. They are Dhruv Agarwal, Bania, Sanjeev Agarwal, Bania, Shiv Agarwal, Bania, Vishwavir Ahuja, Khatri, M.K. Ajay, Samir Arora Khatri, Ajay Bahel, Punjabi Khatri, Balraj, Tarek Abu Zayyad, and Anu Aga. These are all people. So why are these students studying there when it is under Bania hegemony? Secondly, if they do caste center, they let them do caste census first in Ashoka University. If the numbers are higher, will they resign and go back to their parents? Third, if these parents, most of whom are Bania or Brahmins or Kshatriyas, will they disown their parents and do their own loan and do their own studies? Or they will exploit their parents of so-called high caste and endanger the benefits, and then they will demand some rights which have no meaning at all. And I'm afraid these people do not know the name of very successful Dalit entrepreneurs. To just give you some figures of a study done in 2014, in the eastern UP part, after liberalization of 1991, Dalit number rose in entrepreneurship from 4.2 to 11%. In western UP, rose to from 9.3 to 36.7%. In case of blue collar employees, from 14% to 37%. And in East UP, from 13 to 13 to 42%. This is the rise of Dalits. I'll share some more very interesting characters. Milind Kamble, head of Dalit Chamber of Commerce, Raja Naik, Ratibhai Makwana, Ashok Khade, Kalpana Saroj, all millionaires, billionaires rising from the ranks of Dalits
because the changing atmosphere in the society where entrepreneurship is respected, where merit is respected. Do they want a society where there is no respect for merit? Are they going to the vote situation where they will say 2.2 is not 4, it is 2, it can be 5, it can be 7, because the person's gender and person's caste will decide the answer to the question. Are you going to That's a go good back point. That's a from a good point. scientific 1 minute. society That's a to good some point. kind of zombie society? A question here would be, a question here would be, naturally, Dr. Ganga Sahai Meena is an associate professor at JNU and an expert on Dalit and Adivasi matters. Dr. Meena, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, I can. So, is it if this idea, if the idea of all these students is there should be a caste census among students, among employees, among everyone, and everyone should be defined by their caste, then would they also say that it should also extend to the faculty and also extend to the management and also extend to the chancellors, and that certain castes, by this logic, people from certain castes should not be allowed to contribute money, contribute to the coffers, contribute to the management, be part of the management, be part of the higher management, or be part of the faculty at Ashoka University. Charity begins at home, no? There's no point just doing drama and attacking other students and abusing other castes. देखिए अर्नब जी, कास्ट का मसला ऐसा है कि इसको हम ये कहें कि कुछ विद्यार्थियों ने नारे लगाए, इससे जाति पैदा हो गई, ये देखने का सही नजरिया नहीं होगा, क्योंकि भारत के समाज में पहले से जाति है और उस जाति को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ कास्ट है। कास्ट है तो उसको फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें हम कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अगर मान लीजिए कुछ समुदायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो विशेष अधिकार इसलिए दिए गए कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पे कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको हम स्वीकार करें और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों की यही मांग है और इस मांग में कुछ गलत नहीं है। इसमें हाँ, ज़रूर है, किसी जाति विशेष को आधार बनाकर नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। जाति अलग चीज़ है और जातिवादी विचारधारा अलग चीज़ है। आप जाति को टारगेट नहीं कर सकते, मैं ये जातिवादी कह रहा हूँ जो विचारधारा को टारगेट कर सकते हैं। आजकल जो नई ट्रेंड बनी है, देखिए गंगा साहब मीना जी, मैं इस पर थोड़ी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जाति है, मगर मेरी विचार है कि जो एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले जितने यंग लोग सिर्फ जाति के आधार पर अपनी आइडेंटिफाई करते थे, या फिर मंडल कमीशन के बाद उनको दोहराया गया ये बात कि आप अपने पढ़ाई लिखाई मेरिट मार्क्स को भूल के जाति को आधार करके एक दूसरे को जाति के आधार पर आइडेंटिफाई करें, ये 30 साल पुरानी सोच है। आपको भी पता है डॉक्टर गंगा साहब मीना जी कि वो आक्रोश भी नहीं है, वो गुस्सा भी नहीं है, और जाति उतनी एकमात्र सोशल इंडेक्स आज नहीं है। आप 1990 की बात ना करें, 2024 है, 33-34 साल हो चुके हैं और कास्ट सेंसस पूरा फेल कर चुका है एज अ पॉलिटिकल इशू। इतनी कोशिश हुई नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने, मगर कोई रेजोनेंस नहीं मिली। मेरा सवाल आपसे यह है, एकमात्र सवाल है कि जो बात भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दी कास्ट सेंसस की, वो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी पॉश, इतनी इलीट इंस्टीट्यूट जहां पे कितने लाखों रुपए लगते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसे पॉश इंस्टीट्यूट्स में पॉश कास्टिज्म क्यों हो रही है? ये तो बड़ी पॉश इलीटिस्ट कास्टिज्म हो गई ना। ये क्या नया ट्रेंड है? देखिए, आपकी ये बात सही है कि जो जाति मुक्ति की राजनीति जिन्होंने शुरू की, वो राजनीति आज हाशिए पर चली गई है, लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि जाति मुक्ति का मुद्दा खत्म हो गया। जाति मुक्ति का मुद्दा अभी भी है और जाति अभी भी मौजूद है। ठीक बात है कि हम मंडल कमीशन के दौर में वापस नहीं जा सकते, लेकिन उसके काफी समय बाद में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपने देखा कि कुछ लोग सड़कों पर आकर के और जूते साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली कुछ जातियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। आप कह रहे हैं कि जाति खत्म हो गई। इसी देश की राजधानी में जो सबसे बड़े अखबार अंग्रेजी में छपते हैं, सबसे एलीट, जो अशोका यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं,
वो सबसे बड़े अखबार तो सबसे एलीट लोग पढ़ते हैं। उसमें जब आप देखेंगे कि मैट्रिमोनियल छपता है, उसमें उनको कौन-सी जाति की लड़की चाहिए, कौन-सी जाति का लड़का चाहिए। अगर जाति खत्म हो गई तो वो मैट्रिमोनियल की क्या आवश्यकता है? आप उस अगर अखबार आप को सर्वे पूछिए ना। करेंगे नहीं नहीं, आप उस जी, अखबार, वो भी गलत सोच है, मैं मानता हूं वो गलत सोच है, मगर रतन शारदा आपको रिप्लाई करना चाहते हैं। जी रतन शारदा जी, जी। जी, जी, जी। पहली बात है, सुलभ शौचालय को चलाने वाले ब्राह्मण, सुलभ शौचालय को आगे चलाने वाले उनके सारे कॉन्ट्रैक्टर ब्राह्मण, क्या वो नई जाति नहीं है? पसमानदा मुसलमानों का प्रश्न कभी अशरफ ने जवाब दिया है? पसमानदा मुसलमानों को कोई हक नहीं है? क्या ये आपके प्रोफेसर्स जो जाति के ऊपर भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिनको कह रहे हैं कि जाति को भड़काने से जाति हटेगी, वो तो तरीका नहीं है ना। अम्बेडकर ने तो ये नहीं किया था ना। अम्बेडकर ने कहा था पढ़ो और आगे बढ़ो। आप कह रहे हैं पसमानदा जाति के ऊपर इतना न्याय कोई बोला नहीं, स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, राइट्स नहीं है मुसलमानों में। क्या कभी प्रगतिशील किसी प्रोफेसर ने अपने बच्चों को समझाया कि इसके विरुद्ध नारे लगाओ? नहीं, क्योंकि एकमात्र कारण है कि आप हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं और आपका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आपको ब्राह्मणवादी सर, हिंदू प्रीस्ट नहीं समाज देगा। पहले पता से है, टूटा हुआ है। अरे एक मिनट सुनिए प्रोफेसर साहब, जी, 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 गोवा के बिल्कुल अंदर सुन रहा हूँ। पता है इस पर्टिकुलर पीढ़ी तक एक पर्टिकुलर चर्च था जिसमें कोई ब्राह्मण बिशप बन रहे थे। मैं ऐसे बिशप को जानता हूँ जो आदिवासी था पालघर एरिया में, जिसने रिजाइन कर दिया क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उसको कभी उन्होंने बिशप बनाया नहीं, बहुत योग्य था वो। तो ये सारे जाति के प्रश्न क्या केवल हिंदू समाज के हैं? पसमंदा और ब्राह्मणिज्म जो क्रिश्चियनिटी में, उसका सवाल नहीं है? क्या आपने स्टूडेंट्स को बताया? क्या आपने बताया कि ट्रिपल तलाक के विरुद्ध आगे प्रगतिशील खड़े रहे थे, उसने आपने कहा कि महिलाओं की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए? क्या केवल आप एक पर्टिकुलर समाज को, क्योंकि हिंदुओं ने, हिंदू ब्राह्मण ने समाज का ज्ञान, समाज का जो विश्वास था टूटने नहीं दिया, इसलिए सबसे ज्यादा मरने वाले ब्राह्मण थे, उनको आज गालियां दे रहे हैं क्योंकि आपको हिंदू समाज बच गया, बुरा लगता है? बनिया वो वेल्थ क्रिएशन करता है, इसलिए बुरा लगता है? जैसे मैंने बताया, सारे अशोका यूनिवर्सिटी को बनाने वाले, अपनी मेहनत की कमाई डालने वाले बनिए हैं, तो वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? ब्राह्मण और बनियों के बच्चे अपने माँ बाप की मुफ्त कमाई पे मुफ्त में ऐश कर रहे हैं, लाखों की फीस देके, वो क्यों नहीं छोड़ देते? कहते कि चलो हम अपनी कमाई से करेंगे, हम अपने दलित बंधु की फीस भरेंगे। क्या कहा आपने? सेंसस करिए, अशोका यूनिवर्सिटी में कितने आपके स्टाफ के, कितने आपके स्टूडेंट एससी एसटी के हैं? तो बाकी सारे बनिए और बाकी सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये स्टूडेंट को आप निकलने को कहेंगे? भाई साहब, इलाज संघर्ष और गाली गलौज नहीं है। संघर्ष आपका इलाज है, सबको साथ लेके चलिए, नीचे वाले का स्तर ऊपर लाइए। जैसे मैंने उदाहरण दिए, उनका उदाहरण नहीं स्टूडेंट्स को देंगे। आप केवल बांटने का, घृणा का काम करेंगे ताकि समाज टूटे। समाज तोड़िए मत, ओके, समाज जोड़िए। जैसे जैसे उनको बनाने वाले हेडगेवार जी को साहू जी महाराज थे, बनाने वाले उनके ब्राह्मण टीचर थे, और जिनको चढ़ाते थे सारे पॉजिटिव दूसरी बात है गंगा साहेब मीना जी, गंगा साहेब मीना जी, एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। ये कास्ट, ये कास्ट की जो बात है, ये भारत में, जैसे आपको पता है, भारत में ये कास्ट की बात दूसरे रिलीजन्स में भी है, मगर आप सिर्फ टीवी में आके कहेंगे हिंदू समाज टूटा हुआ है, आप कभी मुस्लिम समाज टूटा हुआ है नहीं कहेंगे, मैंने तो आप बिल्कुल जैन समाज टूटा हुआ है नहीं कहेंगे, हिंदू शब्द का आप सिर्फ प्रयोग नहीं टारगेट किया। हिंदू समाज को करेंगे। मगर मैं गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात जरा सुनिए मान्यवर, मैं गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत की राजनीति और संस्कृति और प्रेजेंट ट्रेंड को देखें तो हिंदू समाज एकजुट है, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, और तोड़ने की कोशिशें जो हो रही हैं वो सारे व्यर्थ हैं, बहुत व्यर्थ है, पूरी एकेडमिक है, और एकेडेमिया की सोच गलत है। ये पूरी एकेडमिक अटेम्प्ट्स है। अगर आप जी, ये मानते हैं कि कुछ वोटों का ध्रुवीकरण होने से हिंदू समाज एक हो गया है, तो मैं समझता हूं कि आप सिर्फ सारे सामाजिक परिदृश्य को पॉलिटिकल एक कैनन में देख रहे हैं, जबकि आपने वास्तव मेरा में उत्तर नहीं सच्चाई चलिए कुछ और है। सच्चाई कुछ मैंने और आपको है। सवाल किया, और आपने जहां उत्तर नहीं तक दिए। ये Let's close. जो क्या सज्जन आपने कह रहे थे, इनकी एक बात से मैं मीना जी आपको फिर बुलाऊंगा। कुछ बोला कि आपने पसमंदा मैं रतन महिलाओं के शारदा लिए जी, कुछ मीना जी, पसमंदा समय कम है, मुसलमानों आई एम लिमिटेड बाय टाइम। दिस हैज बीन अ गुड डिस्कशन, वील हैव द डिस्कशन अगेन, but I totally disagree with what has happened on the Ashoka University campus, and if Ashoka University has become the new JNU, then it's very, very unfortunate, very unfortunate. Ladies and gentlemen, I shall see you at 9 o'clock tomorrow. Good night and goodbye.